मला फक्त सांगा एकदा आल्यावर. नमस्कार मित्रांनो, आवाज येतोय का? एकदा फक्त कन्फर्म करा. एम आय ऑडिबल? Okay, fine. Okay, fine. Okay, fine. So let's start our session. Okay. तर आजचा आपला जो सेशन आहे इट इज टिपिकली फॉर द फूड ॲक्ट्स. ओके, हा फूड ॲक्टचा आपला सेशन राहील आणि इन विच द मेजर एम्फेसिस जो आहे आपला तो असेल आपला ओव्हरव्ह्यू ऑफ फूड लॉज. एक्झॅक्टली व्हॉट इज द नेचर ऑफ फूड लॉज, what are the aspects are there in terms of the food laws, what do you mean by the term food safety, how to maintain the food safety, and what are the different types of enforcement body ज्या की सेफ्टी लावू शकतात. सो आपल्याला हे सगळं बघायचं. याच्यासोबतच वी हॅव टू अगेन डील विथ द डिफरंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द गव्हर्नमेंट अथॉरिटीज इन विच टिपिकली आपल्याला फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया याचं स्ट्रक्चर बघायचं आहे. सो लेट्स बिगिन. ओके, सगळ्यात पहिल्याला वी हॅव टू डील विथ द food laws concept. What do you mean by the term food laws? Then what are the types of food laws, and in which are implicable for the specific product, like this way. Then introduction of the act. This act is nothing but the Food Safety and Standard Act, which was established in the year 2006. Okay, then governing structure of the Food Safety and Standard Authority of India. Keep in mind one thing, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, Food Safety and Standard ये act था. To implement the act in a better manner, the authority was there. This authority is nothing but the Food Safety and Standard Authority of India, which was established in the year 2008. Act हमारा कब का है? 2006. Okay, like this way. And finally, Food Enforcement Authorities. इसका मतलब क्या है? Who are the different types of official person? रादर देन ऑफिशियल हम यहाँ पे कह सकते हैं द रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पे कोण आहे. तर जे रिस्पॉन्सिबल लोक आहेत तर मग व्हॉट इज द रोल ऑफ एव्हरी स्पेसिफाईड पर्सन, प्रत्येकाचं काम काय हे आपल्याला याच्यात पाहायचं आहे. आता बघा, सगळ्यात अगोदर वी हॅव टू मीन विथ द व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द टर्म. यामध्ये आपण काय म्हणतो वेन वी टॉक अबाउट फूड लॉज, वेन द वर्ड इज देअर दॅट इज द लॉज, इट क्लिअरली मीन्स दॅट इट इज वन ऑफ द ॲक्ट which is according to law. When we call according to law, that is nothing but the meaning of legislative act. Okay, legislative चा अर्थच काय होतो? It is nothing but according to the act. So it is the legislative act which prohibits, reduce करतं, mitigate करतं. What reduces? Which prohibit the adulteration or different types of misbranding of any article of food. It means what? It is a legislative act which prohibit different things. इथं आपण दोनच गोष्टी सांगितल्यात, but again it provides different things. Like it avoids adulteration, nothing but we could say adding of different types of inferior quality good into the superior one. That is the adulteration. Misbranding, जेव्हा अपन दूसऱ्यांचा ब्रांड यूज करतो, that is the misbranding. Apart from them, इसके अलावा बहुत सी चीजें जैसे misleading advertisement. So ये सब चीजें क्या हो गई? All are these are nothing but the offense. Okay. So when any article of food makes certain offense, so that is nothing but we have to avoid this offense by means of the available food laws. This is the meaning. Now what happened? All laws are actually a legislative act. So उन चीज़ों को हमें actually implement करने के लिए we require certain data, we require certain fact sheet. So वो चीज़ क्या हो गई? हमारे regulations. Okay. So what is regulations? It is typically the written statement. All things are there in a written manner according to the different sections. हर एक sections का वहाँ पे अलग से जायजा लिया जाएगा. Fine. So it requires different sections which is a written statement containing different rules to implement the law. Different rule to implement the law. So it is nothing but the whole written statement of number of items. काय असतं त्याच्यामध्ये particularly? Nothing but the different sections which are pertaining to rules, regulations to implement the law. Means how हा लॉ कसा इम्प्लिमेंट करायचा, इट इज डन बाय मीन्स ऑफ आवर रेग्युलेशन्स. ओके, पुढे जाण्यापूर्वी मी एक सांगेल, इफ यू हॅव एनी क्वेरी तुम्ही कॉमेंट सेक्शनमध्ये टाका. लाईव्ह चॅट चालू आहे, मी जर काही प्रॉब्लेम असेल तुम्हाला त्याचं मी सोल्युशन देईल. फाईन.
नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एन्फोर्समेंट. कसं करायचं? फॉर द पर्पज ऑफ एन्फोर्समेंट वी रिक्वायर टू डिफरंट इम्पॉर्टंट थिंग्स. दोन गोष्टी आपल्याला लागतात. पहिली गोष्ट काय लागते आपल्याला? इन्स्पेक्शन अँड ऑडिट. ओके, फॉर एनी ॲक्ट टू बी अ एन्फोर्स्ड वन आपल्याला काय लागतं? नथिंग बट द इन्स्पेक्शन अँड ऑडिट. इन्स्पेक्शन मीन्स नथिंग बट द थरो इन्स्पेक्शन ऑफ द प्लेस. ज्या ठिकाणी फूड प्रोडक्ट बनतात त्याला आपण म्हणतो इट इज नथिंग बट द प्रिमाइस. ठीक आहे, द प्रिमाइस मीन्स अ प्लेस वेअर ॲक्च्युअली फूड प्रोडक्ट आर प्रोड्युस्ड ऑर मॅन्युफॅक्चर्ड. ती असते आपली प्रिमाइस. तर या सगळ्या जागांचं इट रिक्वायर्स ऑडिट, स्पेसिफिक इन्स्पेक्शन. अँड सेकंड थिंग वी रिक्वायर इज नथिंग बट द इंस्पेक्शन एंड एट द सेम टाइम एनालिसिस. एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब एनालिसिस में क्या होता है? वी नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन द फूड कमोडिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, these could be the harmful. If suppose they are harmful, then what is their maximum residual limit? म्हणजे काही पेस्टिसाइड असतील तर त्यांची मॅक्झिमम रेसिड्युअल लिमिट किती आहे दॅट कुड बी नोन टू अस. इट इज डन बाय मीन्स ऑफ आवर एनालिसिस. फॉर दॅट पर्पज अ स्पेसिफिक एनालिस्ट कुड बी अपॉइंटेड लाईक दिस वे. ओके, सो दीज टू आर द एन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर एनी लॉ. One is the inspection and another one is nothing but your analysis of the particular thing. Now we move towards the types of food laws. आता लक्षात घ्या, when we call food laws, that at that time there are different types. First one is the mandatory. सगळ्यात महत्त्वाची first is the mandatory. Mandatory का मतलब ही क्या होता है? It is compulsory. It means you have to follow the law. It is according to the law or you have to follow it in a compulsory nature. हे रिस्ट्रिक्ट आहे, तुम्हाला ते करणंच आहे. टिपिकली आजच्या कंडिशनला जर आपण पाहिलं, फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ॲक्ट 2006 इज वन ऑफ द कंपल्सरी ॲक्ट किंवा याला आपण म्हणतो इट इज द मॅन्डेटरी ॲक्ट. बिफोर दॅट और प्रिव्हियस टू FSSA 2006 ॲक्ट देर इज अ PFA. PFA means what? PFA, Prevention of Food Adulteration Act, which was established in the 1954. So till the time of 2006 there is only one mandatory act, that is nothing but the FSSA. Oh sorry, that is nothing but the PFA 1954 and later it is 2006 Food Safety and Standard Act 2006. ठीक आहे, तर आता हा मॅन्डेटरी राहिला नाहीये त्या हिशोबाने. ठीक आहे, सेकंड ॲक्ट इज नथिंग बट द other mandatory act. It means they are requisite as per the different types of nature. म्हणजे जेव्हा गरज पडते तेव्हाच आपल्याला त्याला इम्प्लिमेंट करायचं आहे. इट टिपिकली इन्क्लूड्स लाईक SWMA, Standards of Weights and Measures Act 1976. This is one of the most important act. ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण act है related to the weights and measures. As the word itself indicates, Standards of Weights and Measures Act 1976. Then the second act is there, Packaged Commodity Rules, that is 1977. Okay, so ये दोनों एक्ट कहाँ पे आएंगे? अदर मैंडेटरी एक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट CPA मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. देन इसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 1989. So these are some of the other mandatory act. ये कब लगेंगे? फॉर एवरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमें उन नेचर के हिसाब से वी रिक्वायर इट फॉर द स्पेसिफाइड कमोडिटी, दैट इज द अदर मैंडेटरी. फाइन, अब हम बात करेंगे थर्ड वन, दैट इज द FPO. इसे हम कह सकते हैं फूड प्रोडक्ट ऑर्डर. फॉर एवरी स्पेसिफिक फूड कमोडिटी वी रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्ट ऑर्डर. सिंपल एग्जाम्पल अब देखिए, जैसे हमें पता है FPO. सो व्हाट इज FPO? इट इज नथिंग बट द फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर. सो हम जब FPO कहते हैं, सो दैट इज द फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर इज एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द FPO. देन सेकंड वन इज द MMPO, दैट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992. यहाँ पे एक चीज अच्छे से ध्यान में रखिए, व्हेन वी कॉल फूड लॉज एट दैट टाइम द एस्टेब्लिशमेंट ईयर फॉर एवरी फूड लॉज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. हमें जैसे पता चलेगा कि अगर बात निकली PFA की, सो डेफिनेटली हमें 1954 आना ही चाहिए. फ्रॉम द सेम कंसर्न व्हेन वी टॉक अबाउट द FPO, इट इज 1955. तो ये चीज़ हमें आना ही चाहिए. फाइन. देन MMPO, लाइक MMPO के अलावा और भी है, लाइक ये सबसे ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है चीज़. MFPO, दैट इज मीट एंड फूड प्रोडक्ट ऑर्डर. यहाँ पे M stands for meat. Okay, it was there in the 1973.
Then vegetable oil product order 1947, like this way there are different order. इसके अलावा edible oil है, उसके बाद infant food है 1992 का. So all are there act as a food product order. Again solvent extraction है, वो भी एक है. तो ये सब चीज हो गई food product order के हिसाब से. Fine. Fine. So next one is the optional standards. Now when we heard the term optional standards during that time, there are two optional standards particularly from the Indian continent. One is the BIS, it means Bureau of Indian Standard 1986, and second one is the AGMARC, Agricultural Marketing Produce Act. AGMARC way back in the year 1937. 1937 में क्या था हमारा AGMARC. So there are two. One first कौन सा है इसमें? BIS, Bureau of Indian Standard 1986. BIS typically for the gold, for the even for the distillery purpose, and AGMARC is typically for the different types of spices, agricultural commodity, even essential oils, spices and condiments. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या लगेगा? AGMARC. So there is a specified logo either for the BIS or for the AGMARC, and that's why specified logo for the specific product, that's why it is a optional one. And last one is the codex. अब ध्यान में रखिए, codex standard is what? When we try to international level, at that time we have to match with them with concern to the quality standards. That's why we have to follow codex. और इसे commission कह सकते हैं हम, that is Codex Alimentarius Commission, CAC. ये start हुई थी in the year 1962, and India become a part of the codex. India ने कब से codex start की थी? From the year 1964. Okay, so ये हो गए हमारे पूरे types of food laws. बहुत से MCQs और बहुत से एग्जाम्स में ये भी यही MCQs पूछे जाते हैं. So what is the nature of the type of food law? Like okay, if suppose there is a BIS, then that is the optional one, like this way. Okay. Now we move towards how actually what are the milestones for establishment of the Food Safety and Standard Act 2006. Here we are talking about the milestones in terms of the establishment of the act. एक्ट आया था 2006 में, बट व्हाट आर द डिफरेंट माइलस्टोन? सो देखिए सबसे पहले फर्स्ट बात हुई थी इन द ईयर 1998. देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने सबसे पहले रिकमेंड किया था कि देयर कुड बी वन लेजिस्लेटिव कॉमन फूड लॉ फॉर द होल नेशन. एक ही लेजिस्लेटिव, जैसे हमने बताया एज पर द लॉ और एज पर द स्टैंडर्ड्स. सो एक ही होना चाहिए, सबसे पहले 1998 में किया था. देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यू, इस कमिटी के हिसाब से देयर इज अ नीड टू एक्चुअली इंप्लीमेंट ऑल द लॉज अंडर वन डोमेन. मतलब सिंगल अथॉरिटी के हिसाब से ही हमें एक्चुअली लॉ इंप्लीमेंट करना था. सो दैट इज हैपन फ्रॉम द 2004. इन 2005 द स्टैंडिंग कमिटी ऑन एग्रीकल्चर स्टेट दैट food laws should be presented in terms of the committee or in terms of the lower and upper house of the parliament में ये commit करना चाहिए, pass होना चाहिए. Then in the year 2005 also what happened, group of ministers जिसे हम GOM कहते हैं, group of minister approved and proposed integrated food laws, मतलब combination of all different types of food laws with certain modifications. We need certain modifications in that, and in that a specific draft is prepared, and the draft named as the Food Safety and Standard Bill. सबसे पहले ध्यान में रखिए, यहाँ पे बिल कहा है for the draft which was prepared or which was presented in the year 2005. So nothing but the draft named as the Food Safety and Standard Bill 2005. Okay. Then what happened in the year 2006? Bill passed by upper and lower house of parliament. As we know, upper house हमारा हो गया राज्यसभा, लोअर हाउस हमारा हो गया लोकसभा. ओके, सो दोनों में पास होने के बाद द प्रेसिडेंट सिग्नेटरी ऑन 23rd August, ये ध्यान में रखिए, द प्रेसिडेंट सिग्नेटरी ऑन 23rd August, बट द लॉ इज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड ऑन 24th August 2006. या हम उसे टेक्निकल या लीगल टर्म में हम उसे ऐसे कह सकते हैं, द लॉ इज एक्चुअली इनेक्टेड into the Gazette on 24th August 2006. That is the most important. Fine. अब क्या हुआ था? This act is the 34th act of the 2006. Then when we talk about the, एक ध्यान में रखिए, FSA is talking about the Food Safety and Standard Act. Okay. Then क्या हुआ? After 2006 onwards, we are talking about the rules.
how the act is enacted for particular division, like for the different types of additives, what are the rules, different types of toxicants, what are the rules, even packaging and labeling के लिए भी हमें क्या rules follow करना है. So then there is a startup of the food safety and standard rules from there 2011. Okay, so ये कब enact हुआ था? In on 5th August 2011 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस, ये ध्यान में रखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन नोटिफाइड ऑन 5th August 2011. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. हमने अब देखा था व्हाट आर द माइलस्टोन, हमने देख लिए. अब हम बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, फूड लॉस तो आ गए, पर इनको लोगों तक कैसे पहुंचाना है. सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर सर्टेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, ये हमारा एंड रिजल्ट है, हमें वो चाहिए. फाइन. सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज ट्रांजिशन ऑफ डिफरेंट एक्ट. तब सबसे ज्यादा या बड़े पैमाने में कौन सा एक्ट मैंडेटरी था? दैट इज PFA, मतलब Prevention of Food Adulteration Act 1954. So we have to transit the PFA and other orders to food safety standard. So ये हमें ट्रांजिट करना था, तो उसमें हमने क्या किया, इफ एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ड्रॉबैक्स, लूप होल्स अगर उसमें कुछ है तो वो कम करने के लिए हमने क्या किया है, वो सब लूप होल्स हटा के FSS एक्ट में हमने वो ट्रांसफर करने के लिए काम किया था. फाइन. देन सेकंड वन इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फूड सेफ्टी रेगुलेशंस इन द स्टेट्स. अब देखिए, ध्यान में रखिए, व्हेन द वर्क कुड बी परफेक्ट वन, देन एवरी स्टेट डू देयर वर्क इन अ बेटर मैनर. अगर हर एक ने अच्छे से काम किया स्टेट ने, तो ही नेशन का काम बढ़ सकता है. उस हिसाब से वी हैव टू एक्चुअली स्ट्रेंथन द स्टेट लेवल ऑफ फूड सेफ्टी, वो हमें स्ट्रेंथन करनी थी. देन वी टॉक अबाउट द फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी. सबसे बड़ी बात है, इफ वी हैव टू इम्प्लीमेंट द लॉ इनटू द डिफरेंट स्टेट्स, वी रिक्वायर टेस्टिंग लेबोरेटरी. इसे हम कह सकते हैं FTL, सॉरी, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी. अगर वो अच्छे से रही तो बड़े पैमाने में वी कुड मूव टू द पीपल. देन वी टॉक अबाउट द फूड सेफ्टी सर्वेलेंस और इंस्पेक्शन. सर्वेलेंस का मतलब होता है वी रिक्वायर थरो स्क्रूटिनी, जैसे हमने पहले बताया, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन. ये दोनों चीजें यहाँ पे बहुत इसेंशियल है, क्योंकि उस हिसाब से ही वी आर एबल फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड सेफ्टी पैरामीटर्स. मतलब क्या है, द फूड कुड बी डेफिनेटली सेफ फॉर कंजम्पशन पर्पज, और कंजम्पशन पर्पज को सेफ करने के लिए वी रिक्वायर्ड सर्वेलेंस और इंस्पेक्शन ऑडिट्स. फाइन. देन फूड सेफ्टी अवेयरनेस, डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वी हैव टू क्रिएट द अवेयरनेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेयरनेस कैंपेन. मतलब हमें लोगों के तरफ पहुंचना होगा. That's why we require different set of campaign. अगर कैंपेनिंग अच्छी रही तभी लोगों को पता चलेगा कि what is the role of food safety, और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए we require food safety standard act. इसलिए we have to move to the people to create awareness about the food safety. Then training and capacity building. अब देखिए, हमें लोगों की तरफ जाना है, इसका मतलब क्या, we require a set of, we could say a skilled people. स्किल्ड मैन पावर हमें लगेगी, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रेन द पीपल. इफ वी ट्रेन टू द पीपल, देन एंड देन ओनली वी हैव अ सेट ऑफ पीपल हु कुड एक्चुअली टेल टू द पीपल दैट व्हाट इज द रोल, what are the specifications and how we could maintain the food safety. It means the food could be safe for the consumption. So definitely for that concern we could say training and capacity building is the one of the objective. Then establishing the structure of the authority, इस बारे में हम बात करेंगे. We could say the structure is a 3-tier structure. अथॉरिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, 3-tier स्ट्रक्चर है, उसमें 3 टिपिकली ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम बाद में इसमें डिस्कस करेंगे. देन रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग फूड स्टैंडर्ड्स. अब ये सबसे बड़ी बात है. व्हाट हैपन, वी हैव द स्टैंडर्ड्स टिल एंशिएंट डेज, बट क्या है कि आज के मात्रा में अगर हम इंटरनेशनल लेवल से कहाँ कंपेयर करते हैं, सो इट कुड नॉट मैच टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. दैट्स व्हाई वी हैव टू रिव्यू आवर ओन स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी स्पेसिफिक इंटरवल. हर एक इंटरवल पे हमें खुद को रिव्यू करना पड़ेगा, सो दैट वी कुड मैच टू देयर स्टैंडर्ड्स. क्योंकि अगर हमें एक्सपोर्ट करना है फॉर द यूरोपियन कंट्री, then we require Euro certification course. Like this way, apart from that, different courses are there like HACCP, TACCP, even SPS, sanitary and phytosanitary measures. It is typically with concern to the quality and hygiene of the commodity. That's why it is required one. Okay. Yes, definitely. I already told you that PFA is not mandatory. यहाँ पे क्वेरी आई थी. PFA is not mandatory. PFA is mandatory till 2005. इसलिए मैंने यहाँ पे already clear कर चुका हूँ मैं कि PFA is not mandatory till time. Only FSSA is the mandatory. Fine. Okay.
देन वी मूव टुवर्ड्स द ओके. अब ध्यान में रखिए, when we actually in a way to implement the Food Safety and Standard Act 2006, during that time it is a combination of 8 different act. मतलब 8 एक्ट थे अलग अलग से, वो सब एक्ट मिला के अब हमें रिपील किए गए थे. इट इज इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल टर्म्स हम उसे कह सकते हैं रिपीलेशन ऑफ द एक्ट. वो एक्ट अब नहीं रहे, वो एक्ट कन्वर्ट हो गए इन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड. 8 एक्ट थे. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द PFA. जैसे मैंने ऑलरेडी कह चुका हूं मैं, और एक क्वेरी आई थी इसलिए मैं वो बता रहा हूं. PFA इज नॉट सेपरेट एक्ट टिल टाइम, क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो चुका है इन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006. ओके, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव PFA 1954 फर्स्ट था. देन FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 इसमें आ गया. MFPO मीट एंड फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973. देन फॉलोड बाय द वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर, उसे हम VPO कहते हैं, 1947. एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर 1998. सॉलेंट एक्सट्रैक्शन ऑयल, डिआइड फ्लोर एंड एडिबल फ्लोर 1967. MMPO, इस बारे में भी हमने बात की थी. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992. एंड फाइनली एनी अदर एक्ट विच इज देयर विथ ECA, मतलब इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955. तो ये सब 8 एक्ट रिपील होके अब कौन सा बचा है खाली? ओनली देयर इज वन एक्ट, दैट इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट. मतलब आपको हर एक एक्ट अलग से फॉलो करने की अब जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट फॉलो वन एक्ट. कीप इन माइंड, यू हैव टू जस्ट फॉलो फॉर दिस 8 एक्ट, यू हैव टू जस्ट फॉलो वन, दैट इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट. फाइन. ओके, अब हम बात करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के एग्जैक्टली बारे में. ठीक है, ये हो गई हमारी FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. थोड़ा सा इसके डायरेक्टली यहाँ पे आने से पहले मैं थोड़ी बात कहूंगा. देखिए, एक्ट के बारे में बात करूंगा. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में कितने सेक्शंस है? 101 सेक्शंस है. कितने? 101 सेक्शंस. ओके, आउट ऑफ विच देयर आर नंबर ऑफ सेक्शंस विच आर इंपॉर्टेंट. तो उसमें से कुछ सेक्शंस मैं आपको आगे बताऊंगा. सो फ्रॉम दैट कंसर्न, जो हमारी अथॉरिटी की एस्टेब्लिशमेंट थी, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया डन अंडर सेक्शन नंबर 4. ओके, सेक्शन नंबर 4 ऑफ FSSA एक्ट 2006. सेक्शन नंबर 4 के अंदर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट हुई थी. देन अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड द बॉडी नोन एज द FSSAI और टू एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड टू देम. मतलब देयर इज अ वन बॉडी थ्रू आउट द इंडिया हु हैज द पावर टू इम्प्लीमेंट द लॉ. ध्यान में रखिए, ही हैज द पावर टू इम्प्लीमेंट द लॉ under the act. Okay, it was established on 5th September 2008. ये डेट भी अच्छे से ध्यान में रखिए. The authority was actually established in there 5th September 2008. Okay. Yes, definitely the act, PFA act is going to submerged into the FSSA. That's is already preferred. Okay. Then the head office of the authority is at Delhi. Head office इसका दिल्ली है. Then we talk about यहाँ पे देखिए मेन रोल क्या है. FSSAI इन एसोसिएशन विद स्टेट फूड लेबोरेटरी SFA आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट विद कंसर्न टू स्टेट. मतलब सेंटर और स्टेट दोनों को साथ में जाना है फॉर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन. उसको हमने यहाँ पे वर्ड क्या दिया है? एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट. फाइन. अब ध्यान में रखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड सेफ्टी, सो फूड सेफ्टी मीन्स एक्चुअली एश्योरेंस. हमें इंश्योर करना है किसी को या एश्योर करना है. किस बारे में? एश्योरेंस दैट फूड इज एक्सेप्टेबल. डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान रखिए, फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर कंजम्पशन और फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंडेड यूज. मतलब हमें जिस तरीके से इसका यूज करना है, फ्रॉम दैट पर्पज फूड इज एक्चुअली एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फूड सेफ्टी. ओके. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द फूड सेफ्टी एनफोर्समेंट. अब देखिए, हम एक्चुअली टॉपिक पे आ रहे हैं. हमारा फूड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम कैसे थी और उसका एक्चुअली नेचर क्या है फ्रॉम दिस कंसर्न. ओके. ओके, अभी यहाँ पे देखिए, फॉर द मीनिंग पर्पज, व्हेन वी टॉक अबाउट द एनफोर्समेंट, एक्चुअली इट इज अ वे टू एनफोर्स द लॉ. Okay, so it is means how an act is implemented for the welfare of society. Definitely we have to any act, if there is a implementation of act, ये हम क्यों कर रहे हैं? For the welfare of the society. Fine. And promote awareness about food safety across all parts of country. क्योंकि हमें हर एक पार्ट, हर एक कंट्री के हर एक स्टेट में हमें वो implement करना है, so that it could be
वेरी मच सक्सेसफुल, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है, लाइक दिस पॉइंट ऑफ। अब की नोट्स इसमें देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड सेफ्टी एनफोर्समेंट, तो हम इसको दो चीज़ों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज द गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ FSSAI। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, फॉर द FSSAI की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फाइन। एंड सेकंड वन, फूड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। सो इसमें हम क्या बात करेंगे, हु आर द ऑफिशियल पर्सन्स हु आर एक्चुअली गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनफोर्स द लॉ। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर है, एंड सेकंड वे देर इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हु एक्चुअली देयर टू इम्प्लीमेंट द एक्ट इन अ बेटर मैनर, ठीक है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम अभी आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वन, गवर्निंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करेंगे गवर्निंग स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए, फूड अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ 1 chairperson and 22 members। ये सबसे अच्छी ध्यान में रखिए, देयर इज अ 1 chairperson and how many members are there, 22 members are there, out of which 1/3 seats are typically reserved for women। ओके, देन अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने ये प्रोवाइड किया डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी टॉक देयर इज अ 22 members or along with chairperson 23, so how could we distribute them? Okay, so there are 7 members from different ministries, okay, 7 members from different ministries of the government: agriculture, commerce, consumer affairs, food processing, health, legislative affairs, and even SSI, that is small scale industry, fine. Then 2 members from the food industry, we could say experts of the food industry. 2 members from the consumer organization, what they actually require, so उन हिसाब से हमें उनको भी वहाँ पे पकड़ना होगा। 3 members eminent food technologist, जितने eminent scientist है, we have to again consider them, even their recommendations, कारण की आपल्याला त्यांच्या recommendations पण खूप महत्त्वाचे आहेत, that's why we require them. 5 members from 5 different zones, okay, जैसे हमारे 4 zones है, उसके अलावा साउथ ईस्ट, सो हमें पांचों zones के लोगों को हमें यहाँ पे इन्वाइट करना पड़ेगा। 2 members from even farmers organization, because actually they are the one who have the benefit at later stage, so उनको later stage में नहीं डालते हुए हमें उनको अगर पहले ही benefit देना है, so we require their support also. And finally 1 member from the retailers organization, so कुल मिला के 7, 9, 11, 14, 19, 21, 22, so 22 members are there, fine. Okay, now we talk about the some of the structural part of the authority. अब देखिए authority के बारे में हम बात करेंगे। The chairperson of the chairperson or even the members of food authority shall not hold any other office except ex office। मतलब वो अगर एक्स ऑफिशियल पर्सन रहा तो वो कर सकता है, बट उसके अलावा गवर्नमेंट के दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम करता हो, सो ही कुड नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ FSSAI। यहाँ पे देखिए 2 हिसाब से वो एनरोल कर सकता है कोई भी पर्सन। फर्स्ट इज द मेंबर, ओके, एंड सेकंड इज द चेयरपर्सन, ओके। सो इन दोनों हिसाब से एनरोल कर सकता है, बट वो एक्स ऑफिशियल रहा तो ठीक है, पर अगर करंटली कहाँ पे वर्क करता है तो हम उसको एनरोल नहीं कर सकते। देन व्हाट हैपन, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेक अ रेफरेंस टू सिलेक्शन कमिटी फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी। अगर कुछ वैकेंसी है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर करेगा। अब देखिए वैकेंसी इन विच टाइम, अगर किस पोजीशन में वैकेंसी आएंगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वैकेंसी, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि कौन सी चीज में आएगी। फर्स्ट थिंग वैकेंसी कब आएगी, व्हेन बिफोर 2 months, 2 month के पहले वैकेंसी आनी चाहिए। कब, इफ देर इज अ डेथ ऑफ द पीपल, एनी जो ऑफिशियल पर्सन है उसकी अगर डेथ हो गई, और रिमूवल टर्मिनेशन ऑफ एनी एम्प्लॉय, अगर किसी एम्प्लॉय के साथ ये होता है तो 2 महीने में वो वैकेंसी भरनी चाहिए, उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। सेकंड थिंग, बिफोर 3 months इन केस द कंप्लीशन ऑफ ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन उसका कंप्लीट हो रहा है कोई भी ऑफिशियल का, सो डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए हमें ऑफिशियल कौन से इसमें, फर्स्ट मेंबर, सेकंड चेयरपर्सन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द चेयरपर्सन और मेंबर, दे आर अगेन एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है। उनका टर्म कितना है, जनरली 3 years इज द टर्म, द टर्म इज फॉर द 3 years, ओके। एंड द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द मेंबर के लिए 62 years का एज लिमिट है, वाइल फॉर द चेयरपर्सन द एज लिमिट इज ऑफ 65 years, ठीक है। सो उनके लिए कितना एज है, 65 years, ओके। सो ये अच्छे से ध्यान में रखिए। एक बार थोड़े से बात करता हूँ मैं। देखिए 2 months कब पब्लिश करना पड़ेगा, व्हेन देयर इज अ डेथ और वी कुड से रिमूवल और टर्मिनेशन ऑफ एनी एम्प्लॉय, 2 महीने में वैकेंसी फिल करनी है। और 3 महीने पहले, बिफोर 3 month
फ्रॉम द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एनी एम्प्लॉय, 3 महीने के पहले आपको ऐड निकालनी है फ्रॉम दैट पॉइंट. ओके, सो द मेंबर एज शुड बी लेस देन 62 years and for the chairperson it is 65 years and they are again एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट. उनके लिए एक अलग से सिलेक्शन कमेटी बनती है और उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है. ओके फाइन. अब देखिए, द सिलेक्शन कमेटी शैल रिकमेंड अ पैनल ऑफ 2 मेंबर्स फॉर एवरी वैकेंसी. हर एक वैकेंसी के लिए 2 लोग अपॉइंट करते हैं वो, या 2 लोग के नॉमिनेशन किए जाते हैं. रेफर टू इट. टर्म, ओके, टर्म तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, 62 and 65, and reappointment and age profile for member and chairperson, that is again the most important, that we already discussed. Then what happen? Functions of CEO. Okay, अब CEO कौन है? Nothing but CEO का हमें फुल फॉर्म भी बताया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सो ही इज नथिंग बट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फूड अथॉरिटी. अब ध्यान में रखिए, when we heard the word food authority, it is clearly nothing but फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इन्हीं को फूड अथॉरिटी कहा जाता है. फाइन. सो ही इज द सीईओ इज अगेन कॉल्ड एज कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी. ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बहुत जगह पे ये भी वी कुड से दैट कुड बी एमसीक्यू फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस. सीईओ इज आल्सो कॉल्ड एज द कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी. फाइन. Okay, now we talk about how the government structure of food safety authority or food authority का governing structure क्या है. For this we already know it is a 3-tier structure. Fine. अब ध्यान में रखिए, what happen in terms of it is again implemented with 2 different aspect. 2 aspect के हिसाब से ये किया जाता है. कौन कौन से? First one is the food standard. So to implement the food standard we require scientific committee, that is the second tier, and scientific panel, that is the third tier. But the most important one is the required with concept of the compliance and inspection. Okay, it means how to actually implement the act by means of the this one. This is nothing but the central advisory committee. ठीक है ना. और ये कैसे इंप्लीमेंट की जाती है? देयर इज अ स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमिटी एंड आल्सो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टीयरिंग कमिटी. मतलब क्या? If there is a certain ways of district level advisory committee से कुछ recommendation लिए जाते हैं, then also we have to take recommendation from the state level authority, and finally all the valid recommendations go towards the CAC, Central Advisory Committee. Fine. तो इनके हिसाब से ये सब यहाँ पे जाएगा. Fine. So this is the structure one. So इसका 3-tier structure है जो अब आगे आएगा. Okay. So fine. This is the 3-tier structure of the authority. ये हमारा authority का 3-tier structure है. Okay. इसमें सबसे पहले क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी अंडर सेक्शन नंबर 11. जो भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो मैं आपको बताते चलूंगा, आप वो नोट करते जाइए. फाइन. ओके, सो अब देखिए सबसे पहले सेक्शन नंबर 11. अब देखिए इसमें साइंटिफिक पैनल अंडर सेक्शन नंबर 13 एंड फाइनली साइंटिफिक कमिटी अंडर सेक्शन नंबर 14. सेक्शन नंबर 40 के तहत साइंटिफिक कमिटी है. इसमें एक बात ध्यान में रखिए, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी अंडर सेक्शन नंबर 11 एंड द रोल आर देयर इन अंडर सेक्शन नंबर 12. जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन है, ही इज द एक्चुअली नथिंग बट द सीईओ ऑफ द अथॉरिटी और इवन कमिश्नर ऑफ द फूड अथॉरिटी और कमिश्नर ऑफ द फूड सेफ्टी. उसी को कहा जाता है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का जो पावरफुल आदमी है. ठीक है. सो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल फॉर ईच स्पेसिफाइड अथॉरिटी और ईच स्पेसिफाइड टायर. सो ये सब हमारा हो गया 3-tier स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी. ओके, अब इसमें देखिए, द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी कंसिस्ट ऑफ किसके अलावा 2 members each to represent the interest of food industry, agriculture, consumer and even relevant research and food laboratories. हर एक के हमें 2 लेने हैं. उसके अलावा ऑल कमिश्नर्स ऑफ फूड सेफ्टी हर एक स्टेट के हिसाब से एंड चेयरपर्सन ऑफ इवन साइंटिफिक कमिटी, उनको भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सीईओ ऑफ FSSI शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी. ये मैं पहले बता चुका हूँ. अब और एक चीज इसमें जोड़ देता हूँ, CEO ऑफ द FSSI इज आल्सो कुड बी द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी. तो ये दोनों भी इसके हेड होंगे. किसके? सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के हेड होंगे. फाइन. सो इट शैल फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइड बाय द एक्ट. जब भी हम कभी बात सुनेंगे बाय द एक्ट स्ट्रक्चर में या फूड अथॉरिटी में, द एक्ट इज नथिंग बट द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006. ओके, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड. अभी ये कमिटी जो आई हमारी, या हम कह सकते हैं सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी एस्टेब्लिश्ड इन देयर 6th October 2009. So we could again say that that is one of the milestones. So ये भी पॉइंट आप अच्छे से नोट करिए. On the 6th October 2009
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी. ओके, नाउ सर्टन फंक्शंस. ओके, अब सर्टन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी. ड्राइंग अप प्रपोजल्स, तो इन्हें क्या करना है, दे हैव एक्चुअली रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज वन. सो यहाँ पे सबसे पहले बात क्या आएंगी, पुलिंग ऑफ नॉलेज, और वी कुड से एक्वेंट ऑफ डिफरेंट रिक्वायर्ड नॉलेज थिंग्स. नॉलेज के लिए वो उनको जो चीज़ें नॉलेजेबल है वो उनको लेना है. देन दे मूव फॉर द ड्राइंग अप ऑफ प्रपोजल्स, जो चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट उनके करना है उस हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से दे रिक्वायर ड्राइंग अप प्रपोजल्स फॉर द फूड अथॉरिटीज विच आर वैलिड वन एंड विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब प्रपोजल्स तो उनके पास बहुत आएंगे. सो उनमें से कौन सा करना है, सो इट रिक्वायर्स प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क. सो वर्क जो है उनको प्रायोरिटाइज करना है. इसका मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ उनको पहले इंप्लीमेंट करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट आखिरी में जाना है. सो दैट इज नथिंग बट ऑल थिंग्स ऑफ द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द वर्क. सो पुलिंग ऑफ द रिसोर्सेज, एक्वेंटिंग ऑफ द ट्रेंड नॉलेज, ड्राइंग ऑफ प्रपोजल्स एंड इवन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द वर्क. इसके अलावा वी कुड से अगेन, इसके अलावा इट रिक्वायर्स अगेन वन थिंग, दैट इज नथिंग बट एक्वेंट नॉलेज करने के लिए वी रिक्वायर ट्रेनिंग. सो वी हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द ऑफिशियल पर्सन. सो उन्हें हमें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी. वाई, अब वो वर्ड हमारा वापस यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव का, कैपेसिटी बिल्डिंग. ओके, वाई, बिकॉज वी हैव टू इम्प्रूव द कैपेसिटी बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ द मैन पावर अवेलेबल विद अस. क्योंकि अगर हमने उनको अच्छे से कैपेसिटी बिल्ड किया तो ही वो लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच सकता है, तरस ते व्यवस्थित इम्प्लीमेंट होऊ शकतं. सो दैट्स वाई इट इज रिक्वायर्ड. ओके, फाइनली द मीटिंग. अब ये मीटिंग एग्जैक्टली हमें करनी कब है, रिलेटेड टू द सेंट्रल एडवाइजरी मीटिंग. ओके, सो द मीटिंग इट शैल मीट रेगुलरली एट द इन्विटेशन ऑफ द चेयरपर्सन, इन्विटेशन ऑफ द चेयरपर्सन और एट द रिक्वेस्ट ऑफ एटलीस्ट, अब ध्यान में रखिए, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर. एक 1/3 मेंबर चाहिए. एंड मीट नॉट लेस देन 3 टाइम्स इन ए ईयर, एटलीस्ट 3 टाइम तो इनको साल में मीटिंग करना है, उसमें कुछ एजेंडा प्रायोरिटाइज करना है. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑफ प्रपोजल्स, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द वर्क. सो उस हिसाब से उनको एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर उनको मिलना है कम से कम. फाइन. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड, जो हमारा थीटा स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट था, दैट इज द साइंटिफिक पैनल. अब देखिए, इन टर्म्स ऑफ द साइंटिफिक पैनल, जब भी हम कभी वर्ड सोचते हैं पैनल, इट क्लियरली मीन्स दैट इट इज नथिंग बट द expert. We could say panel is nothing but the independent expert. अगर कुछ हमने नया प्रोडक्ट बनाया, कुछ उसमें रेसिपी डाली या कुछ उसमें हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, so we require panel members. Why? To judge. Panel member to judge the things. So from that point of view also, here a scientific panel is typically group of independent scientific expert. They are the expert but in their independent domain. हर एक के डोमेन के हिसाब से ही वो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट आहे. म्हणजे जसं त्यांचं स्पेसिफिक वर्क आहे त्यामध्येच ते एक्सपर्ट आहे, लाईक दिस वे. ओके, सो द फूड अथॉरिटी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम रिकन्स्टिट्यूट द सायंटिफिक पॅनल. इट मीन्स दे हॅव टू रिकन्स्टिट्यूट आफ्टर एव्हरी सर्टन इंटरवल. कधी त्यांना कमी करावं लागतील, कधी जास्त करावं लागतील, लाईक दिस वे, बाय ॲडिंग न्यू मेंबर्स और बाय ओमिटिंग एक्झिस्टिंग मेंबर्स. इट मीन्स दे हॅव टू रिवाइव, दे हॅव टू do the things in every certain period of interval. Now what happened, currently we could say the food authority has constituted, अब देखिए नए कितने आए हैं, न्यू 6 साइंटिफिक पैनल. नए कितने आए हैं, 6 न्यू साइंटिफिक पैनल. सो दैट द टोटल साइंटिफिक पैनल आर currently 19. Currently how many are there? Currently 19 scientific panels are there under the authority. Okay, आता लक्षात घ्या. And that is valid for a 3-year term from 1 January 2020 to December 31st 2022. It means all these 19 scientific panel are valid till the time of December 31st 2022. तर त्या हिशोबाने महत्त्वाचं. As per the provision made under the section of 15, section number 15 of the Food Safety and Standard Act. So that is important. Okay. Okay. Now we talk about our third tier. Third tier, what is this? It is nothing but the scientific committee. Okay. Now what happened in terms of the committee? The scientific committee consists of chairperson of the panel. Panel means scientific panel. And 6 independent experts not belonging to any of the scientific panel. दुसऱ्यांचे नसले पाहिजे, स्वतःचे 6 independent expert. And it is responsible for providing scientific opinion. Why it is important? Because they have to provide the scientific opinion to the food authority. एक लक्षात घ्या, when we talk about the scientific panel मध्ये बघितलं there are different types of panels. Some of them like
panel on the food additives, we could say again final on the labeling constant, toxicants. तर ह्या हिशोबाने there are different types of panels. Now currently in terms of the scientific committee, it shall provide opinion on multi-sector issues. So हे थोडंसं लक्षात घ्या. इसका मतलब क्या है देखिए, scientific committee shall provide opinion on multi-sector issues. What is meaning of this multi-sector issues? When there is a involvement of more than one panel. एकापेक्षा जास्त panel means multi-sector issues. Means maybe the problem of food additives, maybe the problem of residues in one commodity, one product, one good. एकामध्ये हे सर्व आल्यानंतर this is the multi-sector issues. So government or the food authority require the opinion of the scientific committee on the multi-sector issues. पुढे परत दिलेले of more than one scientific panel. एकापेक्षा जास्त असेल तर they have to recommended for the opinion of scientific committee. And finally, currently there are 17 scientific committee and 2 added recently. दोन नवीन ऍड केलेले आहेत along with one scientific committee more and sum up to 20 scientific committee till time. Okay. Okay, one sec, फक्त एवढं लक्षात ठेवा. In terms of the scientific panel, how many are there? 19 and they are valid till the time of 31st December 2020. Okay, and with concern to the scientific committee, currently we have 20 in number. Okay. Now we talk about the enforcement authorities. Okay, आता आपण enforcement authority बद्दल बघू. Why it is required? Because here we have to enforce the plan or enforce the act. To enforce the act, we require helping hand from the different official person. मग हे official person कोणते? Like these are some of the official persons which are most important to actually implement the act. हे act implement करण्यासाठी हे persons आपल्याला खूप जास्त महत्त्वाचे आहेत. Okay, the first is the Commissioner of Food Safety. That is again most important. लक्षात घ्या, when we talk about the Food Safety and Standard Authority of India, all duties powers त्यांच्या section 10 मध्ये. And when we talk about the Commissioner of Food Safety, so he is the in charge for the particular state to maintain the food safety, to enforce the law. All these concerns of the Commissioner of Food Safety. Okay, so it is established under section number 30. Section 30 of the act is for the Commissioner of Food Safety, particularly for the state. मग remaining are under him. मग ह्याच्यामुळे काय, the person who could appoint as a Commissioner of Food Safety don't have a financial interest. त्याचा स्वतःचा financial interest त्यामध्ये नाही पाहिजे. Like this way. Okay. Then designated officer. It is also called as DO. Okay. Currently there is a position. ह्याच्या positions पण बऱ्याच वेळी निघतात for the designated officer. So it is appointed under section number 36. Okay. Designated officer. Typically, designated officer is appointed for the state. Designated officer appointed for the district. State साठी there is a commissioner and for the district there is a designated officer who actually do the things. आपण म्हणू शकतो there is a signature or we could say he has the role in terms of the providing the licenses for the any types of food business. Food business साठी licenses असतील या हम उसमें कह सकते हैं like for the registration license के भी 3 part रहते हैं. First you require if your production is not more than 12 million ton per year, then you just require registration. खाली registration आपको करना है and the fees for the registration is just ₹100 per year. Second, state license. And if you go for the export or seaboard or we could say export and import purpose, then and then only you require central license. Okay, so हमारा registration first, then followed by your state license and finally it is the central license. अब देखिए अब बात करते हैं FSO. Okay, so it is appointed under section number 37 of the act. Section 37 of the Food Safety and Standard Act 2006. Okay, Food Safety Officer, इसे हम कहते हैं Food FSO. Okay, so typically the requirement of the FSO is under the authority. और इसको मिला के एक नई टर्म आजकल बन चुकी है and there is appointment for or there is a recruitment of the different types of officials. उसे कहते हैं हम Central Food Safety Officer. Okay. Then when you could appointed as a FSO, it means under the state, fine, generally. And when your appointment is as a central food safety officer, then you work directly for the authority. So जो बड़े points है और we could say certain points are there where many type of exporting things are there. या कुछ बड़े पैमाने पे जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में exporting होती है या कुछ destination point है जहाँ पे बहुत बड़े FBO है. ये एक बात रहेगी बताने की. FBO is the
food business operator, any type of manufacturer, retailer, even dealer, shopkeeper, any type of person who handling the food commodity or who handles any article of food, that is the food business operator. Fine. So अब देखिए, so any food business operator पे कंट्रोल करने के लिए we require FSO. Fine. So जैसे जैसे डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैमाने में फूड का ट्रेड होता है या बहुत बड़े फूड बिजनेसमैन है वहाँ पे, सो उन पॉइंट्स पे देयर इज अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर. सो गवर्नमेंट की इसमें भी अपॉइंटमेंट बनती है फॉर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. उनकी वेबसाइट पे पूरे डिटेल्स आ जाते हैं उसके. विथ कंसर्न टू एफएसओ, द पावर लाइज टू द एफएसओ. एक्चुअली एफएसओ इज द पर्सन हु एक्चुअली इन्फोर्स एट द फ्लोर स्पेस. एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है दैट इज द एफएसओ. So here he could enter, inspect, search, seize any premise. कौन से भी premise को वो enter, inspect, search, seize कर सकता है where any misleading things are there, और कुछ भी contravention to the act जहाँ पे भी होता है there is a role of FSO. During certain times he could act as a policeman if required. He could stop any vehicle where any suspicious activity could be done. If there is a, अगर वहाँ पे कहीं रेड डाली है and during that time certain perishable commodities are there and they are not safe for the consumption, then with prior permission of the, we could say, government officials, he could destroy the perishable commodities if they are not, we could say, if they are harmful to the human being. Okay. Apart from that, he has again maintained the, or we could say he can calculate the cost of fraud. He again take the surveillance of the different types of book of account. So that is the whole power of the food safety officer. इतना ही बताऊंगा कि इसमें बहुत पावर है, पर हमारा पॉइंट इतना है कि what is the FSO and what is his role. Fine. So he is there to protect the human being from any type of fraudulent activities, any types of misleading activities, or even any types of, we could say, problematic things. Adulteration भी रहा तो वो हमें एफएसओ के हिसाब से करना चाहिए. यहाँ पे एक बात कहूँगा मैं, अंडर फूड अथॉरिटी और अंडर एफएसएसएआई, एफएसओ इज अपॉइंटेड टू टेक द सैंपल फ्रॉम द पीपल और फ्रॉम द एफबीओ. फूड बिजनेस ऑपरेटर की तरफ से वो सैंपल लेते हैं, कलेक्ट करते हैं सैंपल. ओके. सो यहाँ पे ध्यान में रखिए, when he collect the sample, so during that time it is important one, the sample should be 4 in number. कितने सैंपल एफएसओ कलेक्ट करते हैं? 4 सैंपल कलेक्ट करते हैं. प्रीवियसली अंडर द पीएफए एक्ट, पीएफए 1954 के तहत there are 3 samples collected by the food inspector, but currently how many samples could be collected? 4 samples, and that is the question which is important for food commissioner examinations. Fine. Then we talk about the adjudicating officer. So the appointment of adjudicating officer is under section number 68 of the act. Section 68 के अंतर्गत उनकी अपॉइंटमेंट की है. अब इसमें देखिए why it is implemented to tackle with the different types of offense. अगर किसी ने कुछ illegal activity की है, so that is nothing but type of offense. And for any offense there is a provision of penalty. Okay. So उन offense को कम करने के लिए we require adjudicating officer. So he is the in charge of tribunal. Okay. So what is tribunal? Tribunal is a type of court where anything or any offense could be there. So against the offense provision of penalty. So a tribunal एक court है authority का. So उसका head जो है that is the adjudicating officer under section number 68. ट्रिब्यूनल का सेक्शन है 70. अब देखिए इसमें ध्यान में रखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी, जब हम दोनों चीजें कहेंगे तो ध्यान में रखिए देयर आर डिफरेंट ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, और वी कुड से ओके सेक्शन नंबर 50 टू सेक्शन नंबर 65 आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी. उसके अलावा सेक्शन 66 एंड सेक्शन 67 टिपिकली फॉर द एक्सपोर्टिंग पर्पज ऑफ द ऑफेंस. ऑफेंस ये फॉर जनरली फॉर द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर्पज के लिए. जनरल ऑफेंस 50 to 65, in which 65 is for the if death or any types of grievances or any serious injury. So उसके लिए 50 to 65 है. Okay. So हर एक ऑफेंसेस का अलग से कुछ पैमाने हैं, and for every offense there is a provision of penalty. ये किसका काम है? Adjudicating officer. Okay, fine. And finally we talk about the food analyst. Okay. Food analyst is appointed under the section 45 of the act. Okay, food analyst. अब इनमें काम क्या बनता है food analyst का? Typically to analyze the sample. अब ध्यान में रखिए, analyze the sample. The sample is collected by whom? Collected by the food safety officer. फूड सेफ्टी ऑफिसर जब सैंपल कलेक्ट करता है, कितने कलेक्ट करता है? 4.
तो उनमें से एक सैंपल शुड बी गिवन टू द फूड एनालिस्ट. फूड एनालिस्ट को एक सैंपल देना है फॉर एनी टाइप्स ऑफ फर्दर वी कुड से एनालिसिस. ठीक है, फॉर तब फूड एनालिस्ट का काम है if then any types of preservatives are required for we could say storage of the sample, so ये सब काम किसका है, फूड एनालिस्ट का है. And finally the report is given to the designated officer and even to the FSO related to the analysis of the any commodity of the food. Okay, so that is the enforcement authorities. यहाँ पे देखिए कमिश्नर, designated officer, food safety officer, adjudicating officer and even food analyst. Okay, so thank you for today's session. I think that's it for today. If anything are there, you could comment. You could comment on the text session. काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही मला टेक्स्ट मेसेज करू शकता सो दॅट आय कुड आन्सर यू. Rest 3 samples. Okay, FSO collected typically 4 samples. So in which one sample is given to the authority. Apart from that, one is given to the designated officer. And if suppose what happened, अब देखिए क्या हो गया कि कुछ problem आ गया कि there is a verdict that from the food analyst that the sample is having certain type of adulteration. ये ऐसा अगर चीज आ गई तो उस हिसाब से who is the food business, एफबीओ के अगेंस्ट कुछ आ गया कि उसने उसमें कुछ अडल्टेट किया है, कुछ मिक्स किया है, पर एफबीओ को ये बात नहीं पता, या एफबीओ जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसका कहना है कि नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड. सो ड्यूरिंग दैट टाइम द थर्ड सैंपल विच इज अवेलेबल विद देम, तो वो जाता है रेफर के लिए, उसे कहते हैं हम रेफरल लैबोरेटरी के लिए. ठीक है, सो रेफरल लैबोरेटरी के लिए एक सैंपल, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास एक सैंपल कोर्ट के लिए, और फाइनली एक सैंपल फूड एनालिस्ट. सो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल 4 सैंपल्स. ओके, काही अजून क्युरी असतील तर यू कुड कॉमेंट. NABL लॅबोरेटरी डायरेक्टली FSO कुड नॉट मूव टू दॅट. इफ जर सपोज काही प्रॉब्लेम्स आले तरच NABL कडे जाईल. ऑलरेडी त्याच्या व्यतिरिक्त जेवढ्या काही रेफरल लॅबोरेटरी आहेत अथॉरिटीच्या त्यांच्याकडे सॅम्पल जाईल त्या हिशोबाने. हां, फॉर ॲक्रिडिएशन पर्पज, फॉर एनी टाईप ऑफ बिझनेस ॲक्रिडिएशनसाठी NABLला जाऊ शकतात सॅम्पल लाईक दिस वे. Okay. Definitely, for any every requirement of FSSAI is there on their website. fssai.gov.in is the website or is the official website of the FSSAI. तर तेच तुम्ही चेक करा so that you know what are the further requirement or further recruitment for the food authority. अपॉइंटमेंट ऑफ FSO अँड DO डेफिनेटली लक्षात घ्यायच्यामध्ये DO इज द पोस्ट हायर टू द FSO. FSO इज द फूड सेफ्टी ऑफिसर टिपिकली फॉर अ पर्टिक्युलर ब्लॉक, बट DO इज द डेजिग्नेटेड ऑफिसर टिपिकली फॉर द each district one. I think I covered nearly all the questions. जरी काय असतील तर तुम्ही याच्यावर टाका. आय विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर द आन्सर. मी तुम्हाला डेफिनेटली याचे आन्सर्स द्यायचा प्रयत्न करेल, काही इश्यू नाही. ओके ओके, कॉमेंटमध्ये तुम्ही क्वेश्चन्स टाकून ठेवा. यू विल डेफिनेटली गेट द आन्सर विदिन 1 day. ओके फाईन. ओके, सो थँक्यू फॉर टुडे सेशन. मी सेशन इथेच थांबवतो मग. ओके. Okay, thank you.